믿음을 가진 사람과 믿음을 안 가진 사람의 차이는 똑같은 걸 똑같은 환경에서 보더라도 전혀 다르게 볼 수가 있는 것입니다. The difference between those who have faith and those who don't have faith, even though they look at the same thing, they can see it very differently. 그래서 이번 시간에 우리가 믿음을 통하여 예수 그리스도의 마음을 우리가 받게 된다면 So through the word, if we receive the heart of Jesus Christ, 예수님이 없는 우리의 눈으로 보는 것하고 예수님으로 눈으로 보는 것 전혀 차이가 있을 것입니다. there will be difference in seeing the things without the eyes of Jesus and seeing things with the eyes of Jesus. 그래서 예수님의 마음을 받는 것이 바로 믿음의 삶이라고 이야기할 수 있겠습니다. And receiving the heart of Jesus, that is the life of faith. 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 믿음의 삶 시간입니다. नमस्ते सभी को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई ये विश्वास का जीवन है 예, 믿음을 통해서 우리가 행복할 수 있는 और 길이 विश्वास से 있습니다. एक मार्ग है जो हम खुश हो सकते हैं 그러나 이 믿음은 하나님에게 속한 것입니다. विश्वास परमेश्वर का है 그래서 창세기 1장에 보면은 땅의 모습은 혼돈하고 공허하며 흑암의 깊음 위에 और उत्पत्ति 있었다라고 एक 하고 अध्याय में 있습니다. पृथ्वी की दशा ऐसे थी कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था 예, 그런데 하나님이 빛이 있으라 और परमेश्वर ने 하셨습니다. कहा कि उजाला हो 바로 그 빛은 예수 그리스도의 और 빛입니다. वो ज्योति यीशु मसीह की ज्योति है 요한복음 1장에서 그 빛은 바로 말씀이신 예수님이라고 이야기하고 यूहन्ना 있습니다. का एक अध्याय में लिखा है कि जो ज्योति यीशु मसीह है जो वचन है 예, 이 빛은 사람들의 마음의 어두움을 और 몰아내는 ये वो 빛이라고 ज्योति है जो 합니다. लोगों के मनों से अंधकार को भगाती है 예, 저 태양은 이 온 지구를 밝게 비춰주고 있죠. पूरे दुनिया में सूरज जो है वो रोशनी देती है 그리고 오늘 내 주변에 있는 전기불들은 또 오늘 이 실내를 이렇게 밝혀주고 있습니다. और फिर ज्योति जो है वो अंदर होके वो ज्योति उसमें आ जाती है 그러나 예수님의 빛은 이 지구를 비추고 실내를 비추는 게 아니라 우리 마음 안에 있는 절망과 어두움과 정죄와 사망을 लेकिन यीशु 쫓아내는 मसीह की ज्योति जो है 빛입니다. धरती के अंदर नहीं चमकती है लेकिन मनुष्य के अंदर के अंधकार को निराशापन को उसे भगा देती है 예, 예수님은 말씀입니다. यीशु मसीह वचन है 예수님은 और 창조주십니다. यीशु वो निर्माण कारक है 그분이 말씀이 육신이 되어서 2000년 전에 이 땅에 और 2000 साल 오셨습니다. पहले वचन जो है देह बन के नीचे आया 그리고 그분은 이 땅에 오셔서 많은 사람들을 만났습니다. इस दुनिया में आया और बहुत सारे लोगों से वो मिला 하는 사람들에게 행복을 주기 위해서 마음의 믿음을 주시는 모습을 볼 수 हम 있습니다. देख सकते हैं कि कैसे लोगों को खुशी देने के लिए वो विश्वास देता है 그러나 예수님을 만났던 많은 사람들은 그 예수님의 생각과 그 인간의 생각은 달랐습니다. बहुत सारे लोग यीशु को मिले लेकिन उनके शारीरिक सोच यीशु के सोच से बहुत अलग थे 저는 최근에 요한복음을 통해서 또 믿음에 관한 부분을 좀 और हाल ही में 생각했는데요. यूहन्ना की किताब से मैंने विश्वास के जीवन के बारे में मैंने सिखाया 자, 빛이신 그 말씀이 육신이 되어서 2000년 전에 몸을 입고 예수님께서 वो जो 오셨습니다. शब्द जो तो ज्योति है जो शरीर में आए और यीशु मसीह इस दुनिया में आए 그 2000 years 예수님을 ago. 만났던 사람들은 그들은 이 빛 대신 예수님을 잘 받아들이지 못했습니다. लेकिन लोग जो है यीशु को स्वीकार नहीं सके थे जो ज्योति थी 자, 그 놀라운 빛을 하나님은 우리 인간들에게 마음에 선물로 주시기를 और 원하셨는데 परमेश्वर हमें ज्योति देना चाहता था एक तोहफे के तौर पर 근데 문제는 뭐냐면 그 빛을 받아들이기에는 인간의 생각이 그 예수님의 생각과 너무 멀었다는 और 것입니다. हमें जो ज्योति को स्वीकारने के लिए हमारे शारीरिक सोच बहुत लंबा और यीशु से बहुत अलग था वो Yes. 우리가 성경을 마태, 마가, 누가, 요한 이 사복음서를 읽어보면
जब हम मत्ते, मार्क, लूका और जॉन सुसमाचार के 4 किताब को पढ़ते हैं 예, 이 빛 대신 예수님을 영접하기 위해서 인간이 뭘 해야 되는 건 없습니다. और हमें जो यीशु को जो ज्योति है स्वीकारने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. 많은 사람 생각할 때 내가 좀 더 착하게 살고 선하게 살고 내가 뭔가 열심히 잘하면 예수님이 우리 안에 들어올 거라고 बहुत से लोग वो सोचते 생각하지만 हैं कि अगर यीशु उनके पास है कि अगर वो अच्छी तरह से जिए, बहुत ही होनहार थे, जिए, ईनामदार से जिए, 인간이 착하다고 들어오는 것도 लेकिन यीशु 아니고요. इस तरीके से नहीं आता 많은 사람들 위해서 희생하고 봉사를 했다고 क्योंकि 들어오는 उसने 것도 अपने आप 아니고요. को दे दिया और बहुत लोगों को कुछ किया. इसलिए इसका मतलब नहीं कि यीशु ऐसा आता है 왜 Comes. 들어와 달라고 그렇게 간절하게 요청을 한다고 해서 들어온 게 क्योंकि आप 아니고요. गिड़गिड़ाते उसको आने के लिए. इसका मतलब ये नहीं कि वो आता है. 근데 예수님을 영접하는 데 있어서는 한 가지 꼭 필요한 일이 यीशु को 있었습니다. स्वीकारने के लिए एक चीज की जरूरत है. 내가 알고 있는 지금까지의 그 생각을 버리는 일입니다. और जो सोच मैंने बहुत जाना है उसको फेंकना है. 자, 요한복음 2장 1절에 यूहन्ना के 2 보면 अध्याय के 1 अध्याय 1 वचन में 예수님께서 갈릴리 가나의 혼인 잔치에 예수님 어머니와 제자들과 함께 갔습니다. और यीशु जो है उसके माँ और उसके शिष्यों के साथ काना गलीली के जो शादी के भोज में गया था. 예, 그 결혼 잔치에 많은 하객들이 왔고 정말 즐거운 자리였지만 안타깝게도 포도주가 बहुत सारे 모자라는 जो 일이 मेहमान 생겼습니다. शादी में आए मौज मस्ती के लिए, लेकिन बहुत दुख रूप से वो दाक मधु खत्म हुआ. 요즘처럼 이렇게 쉽게 뭐 마켓에 가서 포도주를 사올 수 있는 그런 때가 아니기 때문에 वो ऐसा समय नहीं था कि वो क्यों ऐसे बाहर जाए और बाजार से कुछ दाक मधु खरीदे. 예, 그렇기 때문에 지금 포도주가 모자란 부분으로는 굉장히 심각한 상황이 됐죠. और अभी दाक मधु खत्म हुआ था. ये बहुत गंभीर समस्या अभी हो गई. 그때 예수님 어머니 마리아께서 이 집에 포도주가 떨어졌다고 이야기를 했고 예수님께서 이 일들을 해주기를 और यीशु की माँ मरियम 말하셨습니다. वो चाहते थे कि यीशु इसको संभाले, इसलिए उसने यीशु को ये बात कही. 근데 예수님께서 너무 뜻밖의 이야기를 하셨습니다. लेकिन यीशु ने कुछ अनपेक्षित बात उससे कही. 나와 무슨 상관이 있느냐라고 했습니다. यीशु ने कहा कि मेरा उससे क्या लेना देना है. 내 때가 이르지 않았다라고 मेरा 이야기했습니다. समय अभी तक आया नहीं है. 저는 생각을 मेरे सोच 했었습니다. में 왜 예수님이 나와 상관없다고 하실까? कि यीशु कहता है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. 그리고 왜 내 때가 이르지 않았다고 क्यों उसने ऐसा कहा 말씀하실까? कि उसका समय अभी तक आया नहीं है. 제가 성경 전체를 जब मैंने 생각했었을 पूरे 때 बाइबल के बारे में सोचा, 하나님이 일하실 때는 우리 인간이 손을 놓아야 하는 जब 거예요. परमेश्वर काम करता है तो हमें आत्मसमर्पण करना है. 우리 인간이 열심히 일하고 있는 동안에는 जब हम 하나님은 기다리고 ईमानदारी से काम 계십니다. करते तो परमेश्वर इंतजार करते हैं. 그래서 제가 मेरे 생각을 सोच को 했죠. फेंकते हुए 포도주가 떨어졌다 हालांकि 하더라도 वो उनका दाक मधु खत्म हो गया, 그 주인 혼주들은 뭔가 그래도 다른 데로의 어떤 방법을 찾고 और दूल्हा 있었습니다. दुल्हन दूसरे मार्ग ढूंढ रहे थे. 무슨 소리야? 포도주가 더 있을 거야. क्या 찾아봐. कह रहे हो? दूसरा से कहीं तो वही दाक मधु होगा, जाके ढूंढो उसको. 또 너는 누구에게 찾아가서 포도주를 좀 빌려달라고 좀 और जाओ किसी को 빌려와. पूछो और दाक मधु लेकर आओ. 예, 주인이 이러고 जब 있는 मालिक ऐसे 동안에는 कर रहा था, यीशु 예수님은 इंतजार 기다리고 कर रहा था. 계십니다. 이제 예수님과 상관이 있으려면 क्योंकि उससे कुछ लेना देना था. वो 포도주가 Jesus. 모자라는 이 일들이 예수님의 때를 और दाक 드리려면 मधु खत्म करने के लिए, यीशु को उसका समय देने के लिए 역시 마찬가지로 우리도 어떤 일들을 주님께 맡기려면 주님이 이 문제에 대해서 해결해 주시고 주님의 일하시는 때가 나타나려면 우리는 그 일들을 맡겨놓고 우리는 쉬어야 되는 겁니다. और हमारा काम जो यीशु को सौंपने के लिए, यीशु काम करने के लिए, ये मामला यीशु के हाथों में होना चाहिए. 그래서 이제 예수님이 일하실 यीशु काम 때는 करते तो हमें 우리가 손을 놓아야 आत्मसमर्पित 되는 करना 거예요. है. Go. 예, 주인이 이젠 더 이상 자기 방법이 끝이 अभी 났습니다. मालिक जो है उसका काम हो चुका था. 예수님께서 하인들을 불러서 돌 항아리에 물을 채우라 और यीशु 했습니다. ने नौकरों को पुकार के कहा कि ये पानी के घड़े को पानी से भर दो. 아마 그들은 우물가에 가서 물을 길러서 저 돌 항아리에 물을 채웠겠죠. और मुझे यकीन है कि वो कुएं में गए, पानी लिए और पानी को मुंह में भर दिए. 그때 예수님은 이 포도주를 और यीशु ने 떠다 कहा 주라 कि 했어요. पानी लेकर तुम लोगों को दो. और नौकर बहुत 하인들이 깜짝 अचंभित 놀랐어요. हुए. 예수님 물입니다. यीशु ये तो पानी है. 우리가 우물가에 가서 물을 हम कुएं के 채웠습니다. पास गए, कुएं में से पानी निकाल के लेकर आए. 즉 손님들은 포도주를 लेकिन 원합니다. मेहमानों को क्या चाहिए? उनको दाक मधु चाहिए. 이 물을 떠다 क्या आप 주라고요? उनको पानी देना चाहते हैं? 아니야, 이거 नहीं, ये दाक मधु है. 아닙니다. 예수님 नहीं 물입니다. यीशु, ये तो पानी है. 자, 이렇게 맞설 수 있는 और 거죠. एक दूसरे के ऐसे खिलाफ जा रहे थे.
얼마간 시간이 지났는지 हमें पता नहीं 모르지만 कितना और समय ऐसा बीत गया 하인들은 역시 또 자기 생각을 नौकरों ने 내려놓고 अपने सोच विचार को फेंक दिया 예, 물이라는 자신의 생각을 और 버리고 उन्होंने उस सोच को फेंका कि ये पानी था 포도주라는 예수님 말씀을 और उन्होंने यीशु 받아들이고 के शब्द को स्वीकार किया ये दाख मधु है 손님들에게 और 나눠줬을 때 जब वो मेहमान तक लेकर गए 놀랍게도 그들은 마셨을 때에 अद्भुत रूप 포도주였어요. से जब उन्होंने पिया तो फिर वो दाख मधु था 그리고 그냥 포도주가 아니라 이 세상에 가장 한 번도 먹어보지 못했던 값진 वो एक साधारण 포도주였습니다. दाख मधु नहीं था वो एक ऐसा बहुमूल्य दाख मधु तो कभी उन्होंने चखा नहीं था 하인들은 깜짝 सारे लोग 놀랐죠. बहुत अचंभित हुए थे 아니 हाँ ये 물인데 तो पानी था 포도주가 ये 됐지? दाख मधु कैसे बना 예, 이것이 예수님의 첫 번째 표적인 걸 볼 수. ये पहला चिन्ह था यीशु का 예수님과 만난 जो लोग 사람들은 जिन लोगों ने यीशु से मिले 한결같이 자기의 생각과 सबके 달랐습니다. सोच उनके सोच से अलग थे 요한복음 3장에 यूहन्ना 보면 के तीसरे अध्याय में 니고데모라는 바리새인 중에 그 वहाँ 랍비가 पे रबी 있습니다. जो भी एक फरीसी था जिसका नाम था निकोदेमस 예, 이스라엘의 वो यहूदियों 선생이었고요. का गुरु था 그는 유대 관원이었습니다. और यहूदियों का वो एक अफसर था 예, 그런데 이 예수님을 밤에 और वो 찾아갔지요. रात के समय यीशु को मिलने गया 당신이 하시는 이 모든 일은 하나님과 함께하지 않으면 도저히 이런 일을 할 수가 없습니다. उसने कहा कि अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं होता तो ऐसा काम अभी जो कर रहे हैं आप नहीं कर सकते थे 근데 예수님께서는 내가 진실로 네게 이르노니 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 और यीशु ने कहा 없다라고 मैं 했어요. तुम्हें सच सच कहता हूँ जब तक ये व्यक्ति का नया सिर थे जन्म तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता 예, 다시 태어나야 된다고 यीशु ने कहा कि 얘기했습니다. तुम्हारा नया सिर से जन्म होना चाहिए 그러면 도저히 이해가 안 और 갔습니다. निकोदेमस को समझ नहीं सका था 내가 어떻게 다시 어머니 뱃속에 들어가라 क्या आप 말입니까? कह रहे हो कि मैं अपने माँ के कोख में वापस जाऊं 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다고 했어요. जब तक तुम आत्मा और पानी से जन्मते नहीं तुम नहीं हो सकते 니고데모는 예수님께서 이해하는 그 생각과 맞지 않았습니다. निकोदेमस ने यीशु के सोच से नहीं देखा 그래서 니고데모는 예수님의 말씀을 못 और 받아들였습니다. आखिर में निकोदेमस ने यीशु के शब्द को नहीं स्वीकारा 그래서 3장이 끝날 때까지 니고데모는 예수님과 합해지지는 않았습니다. और यूहन्ना के 3 अध्याय तक निकोदेमस यीशु के साथ एक नहीं हो सका था 이런 Jesus. 식으로 성경에 우물가에 나온 사마리아 여자가 यूहन्ना के 나옵니다. 4 अध्याय में एक स्त्री जो है कुएं के पास आई थी 예수님은 사마리아. 영원히 목마르지 않는 물에 관한 이야기를 और यीशु 했습니다. उस पानी के बारे में कहता है कभी प्यासा नहीं हो सकता 여러분 세상에 그런 물이 어디 있습니까? और क्या दुनिया में ऐसा कोई पानी है The 그러나 world? 그 여자는 그 이야기를 그대로 받아들였습니다. लेकिन स्त्री ने उस शब्द को जो का तो स्वीकारा 그리고 4장 이제 5장에 와 38년 된 और 병자가 5 अध्याय 있습니다. में 38 वर्ष का जो रोगी है 그는 오랫동안 침상에 누워서 꼼짝을 할 수 लंबे समय 없었습니다. के लिए वो खटिया पे पड़ा हुआ तो कुछ नहीं कर सका था 그를 일으켜 줄 가족도 उसके 없습니다. परिवार वाले भी नहीं थे उसके पास 예수님께서 और यीशु ने 말씀하십니다. कहा 너 일어나 네 자리를 들고 उठ 걸어가라. अपना खाट उठा के चल फिर 자기 생각을 가지고 내가 어떻게 걸어갈 수 उसकी सोच 있지? से वो सोचता है मैं कैसे चल सकूं 자기 생각을 अगर वो 믿으면 अपने सोच पे भरोसा करता है तो 예수님이 일어나 걸어가라는 말을 तो 들을 फिर 수 यीशु के 없죠. शब्द को सुन नहीं सकते हो, जो कहता है कि उठ अपना खाट उठा के चल फिर 놀랍게도 38년 된 병자는 예수님 말씀을 अद्भुत रूप 받아들입니다. से ये 38 वर्ष का रोगी जो है यीशु के शब्द को उसने स्वीकारा 그리고 요한복음 6장에서 보면은요. यूहन्ना का 6 अध्याय में 예, 그 빈들에 5천 명이 और 먹을 वैसे 게 उस 없습니다. जगह में जंगल में कोई 5,000 लोगों को खिलाने के लिए कोई खाना नहीं 그래서 था 제자들은 먹을 것을 사 먹기 위해서 동네의 사람들을 각자 보내자고 और यीशु 했습니다. के शिष्य ने कहा कि खाना लेने के लिए उनको गांव में भेजेंगे 예수님, 아니다, 너희들이 갈 것 없다. 너희가 먹을 걸 주라라고 लेकिन यीशु 얘기했습니다. ने कहा कि उनको बाहर भेजने की जरूरत है तुम उनके लिए कुछ खाना लेकर आओ 그때 빌립이 주여 200데나리온이라는 그 돈이 있어도 이 떡을 사도 부족합니다라고 했습니다. और फिलिपुस ने कहा कि हालांकि 200 दिनारी पैसे क्यों नहीं हो लेकिन सबको हम खिला नहीं सकते 예, 그게 정확한 जी हाँ वो 계산법이죠. सही मापदंड था 근데 안드레는 लेकिन 이야기합니다. अंद्रिया ने कहा 어린아이의 작은 보리떡 एक 5개가 छोटा लड़का 있습니다. है जो 5 जौ की रोटी है 그리고 물고기 2 और 마리가 2 मछली 있습니다. है उसके हाथों में 그것은 한 어린아이의 한 끼의 वो एक 도시락인데 आहार एक लंच बॉक्स जैसा वो छोटे लड़के का 그런데 예수님은 लेकिन 말씀하시기를 यीशु ने कहा 사람들 앉게 해라라고 했습니다. लोगों को नीचे बिठाओ 예, 그리고는 우리 예수님께서 그들을 충분히 배불리 먹이시고 5천 명을 먹이고 12광주리가 और 남았습니다. यीशु ने सारे 5,000 लोगों को भरपूर पेट खिलाए और 12 टोकरियां भी बची रही 예, 여러분 예수님을 만났던 사람들은 한결같이 자신의 생각과 다른 이야기를 들었습니다. सारे लोग जो यीशु को मिले हर समय उनके सोच से मिलता जुलता नहीं था
예, 8장에 가늠 중인 여자가 나옵니다. और योना का 8 अध्याय में व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री थी, 그는 가늠하다 वो व्यभिचार में 잡혔고요. पकड़ी गई थी 모세의 율법에 의해서 그는 돌에 맞아 और 죽어야 मूसा की व्यवस्था 됐습니다. के अनुसार उसको पत्थर मार के उसको मार डालना चाहिए था। 모든 사람들은 그 여자를 향해 돌을 들고 सारे लोगों 있었고요. ने पत्थर उठाए तो उसको मारने के लिए, 그 여자는 정죄를 당할 수밖에 और फिर 없었습니다. सिर्फ दोषी ही ठहरा सकी थी वो। 자, 그런데 예수님 और फिर यीशु 오셔서 आया, 너희 중에 죄 없는 자는 그에게 돌로 치라 하시고 उसने कहा जो निष्पाप है तो पहला पत्थर उस पे मारो, 거기 있는 사람 모든 사람 और 다 यीशु ने 내어 सबको वहां 쫓으셨습니다. से निकाल दिया। 그리고는 예수는 여자에게 이야기합니다. और यीशु ने उस स्त्री से बातें की, 나도 너를 정죄하자. मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहरा था। 어떻게 이런 이야기를 하실 수 कैसे 있죠? वो इस प्रकार की चीजें कह सका था? 정말 예수님 하는 이야기는 너무나도 다른 이야기입니다. सचमुच में जो यीशु ने कहा पूरा अलग था। 많은 사람들이 죄인이라고 돌을 던지고 있는 정죄를 बहुत से 하는데 लोग उसको दोषी लगा रहे थे, उसको पत्थर मारने के लिए तुले थे, 예수님은 정죄하지 않으신다고 이야기하고 लेकिन 있습니다. यीशु कहता है कि उसके ऊपर दोषी नहीं ठहराता। 그리고 하나만 더 और औरत 이야기합시다. कहती है, 예, 요한복음 यूहन्ना का 9장이에요. 9 अध्याय में 나면서부터 소경된 사람이 एक 있었어요. व्यक्ति है जो जन्म का अंधा है। 유대인들은 그 소경은 하나님 앞에 저주를 받았다라는 그런 어떤 풍속이 और यहूदी लोग 있습니다. ऐसे रिवाज में कुछ विश्वास करते हैं कि अंधे लोग को परमेश्वर ने शाप दिया जैसे। 이 사람도 역시 생각할 때 우리 집안에 죄가 많았어. और इस आदमी ने भी बहुत सोचा कि बहुत सारे पाप है मेरे परिवार में, 아니면 내가 죄를 많이 지었나 봐. या कि मैंने शायद बहुत पाप किया हो, 나는 하나님 앞에 저주를 शायद मैं 받았어. परमेश्वर के सामने शापित हो चुका है। 왜 그 집안의 모든 사람들은 소경이 나면은 다 그렇게 생각한대요. 그래서 가난하면 어쩔 수 없이 구걸을 하러 밖에 나오지만 구걸 안 해도 살 수 있는 사람이라면은 절대 밖에 और 나오지 जो है 않는다. जो जिनके पास पैसे है वो कभी बाहर ऐसे आ नहीं सकते, 그리고 그 집에 소경이 난 것조차도 전혀 और 알지 वो ऐसे 못하도록 तय 한답니다. करते कि एक अंधा व्यक्ति जन्म लिया है इस परिवार में, 만일 그 집안에 소경이 났으면 저 집은 하나님께 저주받은 집안이야 이렇게 낙인이 찍히기 कि 때문에 जिस दिन प्रकट होता है कि अंधा व्यक्ति जन्म लिया है परिवार में, इसका मतलब है कि ये परिवार शापित हो है। 그래서 절대로 그들은 소경이 나면 इसलिए 숨긴다. जब एक जन्म का अंधा जन्मता है तो लोग छुपाते हैं, 근데 가난하면 어쩔 수 없이 구걸하러 क्योंकि वो 나와야죠. गरीब होते हैं, उनके पास कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन सिर्फ भीख मांगने के लिए। 예, Send him to 구장에 예수님의 제자들이 예수님께 और यीशु के 묻습니다. शिष्य ने उसको पूछा, 예수님 저 사람이 소경으로 난 것이 네 죄로 और ये व्यक्ति जो है 인함이오니까 जन्म का अंधा हुआ है तो किसके पापों की वजह से? उसके माता 부모입니까? पिता के पाप की वजह से, या 자기옵니까? कि उसके पाप की वजह से? 소경이 눈은 ये अंधा व्यक्ति 감았지만 का आंखें बंद है, Knows, लेकिन वो सुन 들었죠. सकता था। 늘 그렇게 इस 생각해왔단 प्रकार 말이에요. से वो अब तक सोचा आया करता है, 평생을 그렇게 생각하고 उसका 살았단 पूरा जीवन 말입니다. ऐसा उसने जिया है। the 우리는 whole 죄가 life लेकिन 많아. पाप है, 저주를 मैं शापित 받았어. हूँ, 그래서 나는 빛을 못 보잖아. इसलिए मैं ज्योति को देख नहीं सकता। 그런데 예수님은 대답이 달랐어요. लेकिन यीशु का जवाब अलग था। 그 부모나 자기가 그 사람이 죄를 많아서 소경된 것이 아니다. उसने या उसके माता पिता ने बहुत पाप किया इसलिए वो अंधा जन्म, ऐसा नहीं है, 하나님 그를 통하여 하나님이 일을 क्योंकि परमेश्वर उसके 하십니다. जरिए काम करना चाहता है। दूसरे 다시 शब्दों में 말하면 이거 하나님의 영광을 ये है 위함이야. परमेश्वर की महिमा के लिए है, 이거 저주 ये शाप 아니야. नहीं है, ये 축복이야. आशीर्वाद है, 하나님이 하시는 일을 나타내기 और ये 위함이야. परमेश्वर के कामों को दिखाने के लिए है। 소경은 한 번도 이렇게 और 들어본 अंधे 적이 व्यक्ति ने 없습니다. कभी ऐसा सुना नहीं था, 저주라고 उसने 생각했죠. सोचा था कि शाप है, 늘 정죄를 हमेशा दोष 당했죠. भावने पर पड़ा था। 이건 하나님 앞에 벌을 उसको 받았다고 लगा था कि 생각해요. वो परमेश्वर के सामने सिर्फ दंड पाया गया था, 우리 집안이 죄가 많다고 उसको लगा था 생각해요. उसके परिवार में बहुत सारे पाप है, लेकिन परमेश्वर का जवाब अलग था, 전혀 다른 पूरी तरह 이야기였어요. से अलग था। 너 이거 축복이야. हाँ, ये तो आशीष है। 바로 이거 그 이야기를 소경이 들을 जब अंधे 때 व्यक्ति ने ये बात सुना, 소경의 마음에 참된 빛이 찾아왔어요. सच्चा ज्योति इस अंधे व्यक्ति का मन में आया। 눈 उसकी 감았지만 आंखें बंद थी, 바로 그 예수님 입에서 나오는 말씀은 그 사람에게 빛이 되었습니다. लेकिन यीशु का शब्द उसके मन में एक ज्योति बना। 창세기 1장 3절에 빛이 있으라 하셨던 그 빛 아닙니까? उत्पत्ति के पहले अध्याय 3 वचन में ये वो ज्योति नहीं है क्या, जो कि ज्योति उजाला हो? 절망 속에 정죄 속에서 살아가고 있는 जो 사람들의 लोग बहुत ही 마음에 निराशपन में गिर रहे हैं या कि दोष भावना में गिरे हैं, 예수님의 그 빛은 그 마음에 소망을 주고 생명을 주고 정죄에서 और यीशु 벗어나게 मसीह 하지 का जो ज्योति है 않습니까? उनको आजादी देता है, उनके निराशापन के, उनके दंड से, और फिर उनको सिर्फ खुशी और आनंद 예, देता है। 그렇습니다. जी हाँ, वैसे ही है। 예, 소경의 마음에 빛이 왔습니다. ज्योति इस अंधे व्यक्ति के पास आया, 그리고 하나님은 실로암 못에 보내서 그의 육신의 눈도
띄워주는 일을 और यीशु 하십니다. ने उसको को काम किया शलोम कुंड में भेजा और उसके शारीरिक आंखों को खोल दिया। 예, 지금까지 우리 예수님 하시는 여러 가지 일들을 और 이야기했습니다. यीशु के बारे में बहुत सारी बातें मैंने कही। 자, 오늘 우리가 이 믿음의 삶을 이야기를 듣고 있는 우리 CLF 모든 부분들도 और सारे सदस्य CLF के जो ये विश्वास के जीवन को जो सुन रहे 우리의 हैं 믿음을 가지기 위해 우리가 뭘 더 열심히 해야 될 것이 아니라 내 생각을 버리는 일입니다. और विश्वास पाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपने सोच को फेंकना है, 나를 부인하는 이야기입니다. मन को इनकार करना है। 그래서 성경은 그러한 것들을 통해서 오늘 우리들에게 말씀해 주고 और इसके जरिए 계십니다. आज बाइबल हमसे कह रहा है। 이런 이야기는 성경의 여러 구석에 이야기를 बाइबल 하고 में बहुत 있습니다. सारी जगह में इसके बारे में कहा गया है। 하나님 모세를 불러서 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내는 그 일들 और 앞에서도 इस्राएल लोग को मिस्र देश से बाहर निकालने के पहले 모세의 생각을 바꾸는 일을 먼저 परमेश्वर ने पहले 하십니다. मूसा के सोच को बदलने का काम किया। Moses 모세는 thought. 자기가 잡고 있는 지팡이 이것이 나를 위한 거고 나를 보호했다고 생각했지만 मूसा सोच रहा था कि वो जो लाठी जो है उसने पकड़ रहा था, वो उसको रक्षा कर रहा था, उसको संभाल रहा था। 하나님 모세가 잡고 있는 그 지팡이를 손에다가 놓게 परमेश्वर ने 해서 उसको लाठी को उसको निकलवा दिया, जो उसने जो पकड़ के रखा था। 그것이 뱀이 되고 그것이 모세를 해하는 일이라는 것을 보여주고 계십니다. परमेश्वर ने दिखाया कि वो एक सर्प है, उसको हानि पहुंचा सकता था। 모세는 और 깜짝 मूसा बहुत 놀랐어요. शॉक हुआ। 한 번도 그렇게 생각 안 उसने 했습니다. इस प्रकार से कभी सोचा नहीं था। 그리고 모세는 자기가 한 손이 और 깨끗하다고 मूसा ने सोचा 생각했어요. था उसका इसका एक हाथ एक साफ है। 자기가 한 clean. 일이 깨끗하고 거룩하다고 उसको 생각했습니다. लगा था कि ये शुद्ध और साफ है। 그러나 하나님은 품에 넣었다가 내어보니 이 손이 문둥병으로 더러워진 것을 보여줬습니다. लेकिन जब उसने अपने हाथ को छाती पे रखा और बाहर निकाला तो वो कोढ़ था। 그래서 모세가 자기가 깨끗한 손이라고 했지만 하나님은 더러운 손을 보여줬습니다. मूसा ने देखा कहा कि वो शुद्ध हाथ है, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये 하나님은 गंदा 나일 हाथ है। 강가에 그 강물이 생수라고 생각하고 있었지만은 मूसा को लगा था कि ये नील नदी का पानी हम पी सकते हैं, 그 피가 되어서 사망이 되는 것을 보여주고 계십니다. लेकिन परमेश्वर से दिखाया कि कैसे वो लहू है और वो सिर्फ मृत्यु है। 하나님 모세를 불러서 일을 하실 때 더 똑똑해야 되고 더 강해야 될 것이 जब परमेश्वर 아니라 ने मूसा को बुलाया तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत होनहार या कि शक्तिशाली बनना है, 자기 생각을 버려야 उसके 돼요. अपने सोच को फेंकना है। 그래야지만 그 애굽에 430년간 종살이 했던 이스라엘 백성들을 하나님은 이끌어낼 수 있는 것입니다. उस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो 430 साल थे मिस्र देश से बाहर निकाला। 하나님이 아브라함 믿음의 조상 아브라함을 부를 때도 역시 마찬가지입니다. परमेश्वर ने इब्राहिम को जो विश्वास का पिता बुलाया वो वैसे ही था। 그 아브라함이 강 건너편에서 다른 신들을 아버지 데라와 함께 섬기고 있을 때 नदी के दूसरे बाजू में जब दूसरे भगवानों की जब सेवा कर रहा था अपने पिता के साथ में, 하나님은 그 메소포타미아에서 바단 아람에서 그리고 하나님은 가나안으로 이끌어 드리는 걸 볼 수 있습니다. हम देख सकते थे कैसे परमेश्वर ने उसको मेसोपोटामिया से पदानवन से कनान देश में उसको लेकर आए। 성경은 데라가 죽은 후에 하나님께서 아브라함에게 나서 너희 본토 친척 아비집을 떠나라라고 창세기 12장 1절이 시작되어집니다. और उत्पत्ति का 12 देश शुरू होता है कि तेरह मर जाता है और फिर अब्राहम को परमेश्वर उसके देश से उसके पिता के घराने से बाहर निकालते हैं। 저는 창세기 12장을 읽으면서 어느 날 이 생각을 जब मैंने 해봤습니다. उत्पत्ति का 12 अध्याय पढ़ा एक दिन मैंने ऐसा सोचा, 이거 창세기 12장 아브라함 하나님 부르신 이야기를 तो 누가 फिर परमेश्वर ने 적었지? अब्राहम को बोला ये कहानी किसने लिखा? 아브라함이 क्या ये 적었습니까? अब्राहम ने लिखा है? 누가 적었습니까? तो फिर किसने लिखा है? 여러분, 아브라함보다도 600년 후에 태어난 모세가 시내산에서 하나님이 불러주시는 것을 기록한 게 모세오경입니다. 5 किताब जो मूसा 600 साल पहले बाद में जन्म लिया था और पर्वत सिनाई पर परमेश्वर ने, और मूसा तो 600 साल बाद में तो पैदा हुआ था और वो पर्वत 예, सिनाई 그래서 पे 창세기, परमेश्वर की ओर 출애굽기, से ये 레위기, 5 किताब 민수기, लिखा। 신명 이걸 उत्पत्ति, 모세오경이라고. निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरणी, सब 5 किताब। 그럼 창세기 12장은 모세가 और 기록했어요. मूसा ने उत्पत्ति का 12 अध्याय लिखा। 모세 어디 있었습니까? 12장에 있을 때. उत्पत्ति के 12 अध्याय में मूसा कहाँ पर था? 아브라함이 허리에 वो शायद 있었겠죠. अब्राहम के अंदर हो सकता था। 600년 후에 이 모세가 창세기 12장을 600 साल 기록했어요. बाद मूसा ने उत्पत्ति का 12 अध्याय लिखा। और 저는 मैंने सोचा, 생각했습니다. 모세가 और 기록한 게 जब मूसा ने 아니고 लिखा, 하나님이 परमेश्वर ने 불러서 बातें की Book 모세의 और 손을 मूसा के 통해서 हाथों के जरिए ये says, 기록- लिखा गया था।
그러면 하나님은 아브라함을 통해서 이 믿음의 세계를 우리에게 이야기를 하실 और 때 इब्राहिम के जरिए जब परमेश्वर में विश्वास के बारे में कहता है 믿음이 어떤 것들을 오늘 우리에게 가르치기를 원하셨습니다. और किस प्रकार का विश्वास परमेश्वर में सिखाना चाहता था। 아브라함이 뭘 해서 하나님께 복을 받았습니까? परमेश्वर से आशीष पाने के लिए इब्राहिम ने क्या किया? 창세기 God. 12장 읽어보면은 아브라함은 사람이 성실한 사람 또 아니면은 참 진실한 사람 그런 모습이 안 जब 나옵니다. आप उत्पत्ति पढ़ते हैं हम नहीं देख सकते कि इब्राहिम बहुत ही होनहार था क्या कि बहुत ईनामदार था। 예, 가나안에서 살다가 흉년이 드니까 애굽으로 내려갑니다. वो कनान में रह रहा था और जब अकाल आया तो फिर वो मिस्र देश को चला जाता है। 그래 애굽에 내려갔을 때 자기 아내를 얼굴이 예쁘니까 누이라고 이야기하라고 합니다. और मिस्र देश में क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी उसने उसको बोला कि मुझे भाई बुलाए। 그래가지고 아내를 바로의 왕에게다가 그냥 넘겨져 버리는 것을 볼 수 और हम देख 있습니다. सकते हैं कि कैसे उसने अपने पत्नी को फिरौन के हाथों दे दिया। 세상에 그런 남편이 어디 क्या 있습니까? आपने ऐसा कभी पति देखा है? 근데 뭐가 하나님이 아브라함의 믿음의 और 조상이라 फिर क्यों 합니까? अब्राहम क्यों परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम विश्वास का पिता है? 하나님이 이야기하시는 이 विश्वास 믿음의 का जो 세계는요. दुनिया जो परमेश्वर जो बातें कह रहा है ये है कि 성실하고 능력 있고 वो ऐसा 착하고 ऐसा 이런 नहीं 게 कि वो 아니고요. अच्छा होना या कि माहिर होना या होनहार होना है। 자기 생각을 ये 버리는 है एक की सोच को फेंकना। 나를 वो 믿지 मेरे 않는 खुद के 것입니다. सोच पे विश्वास नहीं करना। 믿음의 विश्वास का 삶이라는 जीवन 것은 내 안에서 내가 알고 있는 경험 안에서 사는 और वो 것이 मेरे 아니고 खुद के अनुभव के अंदर जीना वैसा नहीं है। 하나님의 놀라운 말씀이 오늘 우리 안에 जब अद्भुत 들어와서 परमेश्वर का शब्द हमारे मन में प्रवेश करता है 그 말씀이 오늘 우리의 और 생각을 ये 버리게 शब्द जो 하고 है हमारे सोच को फिकवाने लगाता है 우리가 한 번도 생각하지 못했던 그 세계로 이끌어주는 모습을 볼 और 수가 हम देख 있습니다. सकते हैं उस दुनिया में हमें लेकर जाते हमने कभी अपेक्षा नहीं किया था। 그래서 오늘 우리는 어떤 눈으로 और कौन 보느냐? से नजर से मैं देखता हूँ। 바로 See. 믿음의 삶은 내 눈을 버리고 하나님의 말씀으로 보는 것이 और कौन 믿음의 से नजर से 삶입니다. हम देखते हैं उस नजर को फेंकना और परमेश्वर के शब्द को स्वीकारना वो विश्वास का जीवन है। 여러분 오늘 우리 이 눈으로 보는 जो 세계가 있지만 जो दुनिया हम अपने नजरों से देखते हैं 믿음이란 건 눈으로 보는 게 아니고 마음으로 보는 세계거든요. विश्वास जो है आंखों से देखने वाली चीज नहीं लेकिन मन से देखने वाली चीज है। 그래서 우리가 이 마음의 세계를 우리가 하나님으로 और अगर 말미암아 우리 보게 परमेश्वर के जरिए अगर 된다면 हम विश्वास के दुनिया को देखें तो 이 마음의 세계는 너무 놀라운 것을 और 우리가 विश्वास के 발견할 수 있습니다. मन के दुनिया में हम अद्भुत चीजों को देख सकते हैं। 하나님 마침내 아브라함에게 100살 때 이삭의 아들을 줍니다. और अब्राहम जब 100 वर्ष का था परमेश्वर ने उसको इजाक दिया। 아무도 이 아브라함이 100살 때 그 안에 사라를 통하여 자식을 낳을 거라고 아무도 생각하지 못했어요. और किसी ने सोचा नहीं था कि सरा के जरिए अब्राहम को 100 वर्ष की उम्र में उसका इजाक होगा। 그러나 하나님은 약속대로 아브라함에게 그 약속을 이루는 모습들을 लेकिन हम 볼 देख 수가 सकते हैं कि 있어요. अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे उसका वादा परिपूर्ण कर दिया। 그래서 성경에는 이 믿음의 세계를 우리가 경험하기 위해서는 내가 알고 있는 그 세계를 버려야 되는 것입니다. और विश्वास को दुनिया को अनुभव लेने के हमें अपने सोच को फेंकने की जरूरत 여러분 है। 믿음을 경험하고 क्या 싶습니까? आपको विश्वास अनुभव करना चाहते हो? 여러분 붙들고 있는 것을 कि जो 내려놓아야 आप 됩니다. धरे रखे उसको आपको फेंकना है। 하나님은 그럴 때 우리를 통해서 너무 아름답게 역사하시고 일하시는 모습을 볼 수 있습니다. तो हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अद्भुत रूपी से काम करता है। 성경에 그러한 사람들 자기가 이해가 안 가지만 걸음을 내딛었던 사람들의 이야기가 너무나도 이야기가 많이 나옵니다. बहुत सारी कहानियां लोगों के हालांकि उनको समझ में नहीं लेकिन बाइबल में एक कदम उन्होंने आगे बढ़ा है। 예, 하나님의 종들은 더 이상 자기 눈으로 보지 않습니다. परमेश्वर के दास कभी अपने नजर से देखते नहीं है। 성경의 사도행전에 보면 사도 바울이 많은 일들을 하는 걸 और 볼 수 प्रेरित के 있습니다. अध्याय में हम देख सकते हैं प्रेरित पॉल बहुत सारे काम करता हुआ। 한 번은 우리 이번에 CRF 주강사이신 우리 박수 목사님께서 어느 교회에 예배당을 짓고 헌당 예배를 드릴 때였습니다. ऐसा समय था कि सीनियर पास्टर ऑक्सू पार्क जो नया चर्च बंदा था उसका जो समारोह में आए थे। 예, 그때 우리가 사도행전 20장에 관한 이야기를 그날 이제 이야기를 해 और पास्टर 주셨는데요. ने प्रेरित के 20 अध्याय के बारे में बातें की। 예, 이 사도행전 20장 7절에서 अगर 12절을 7 से 보면 12 वचन अगर हम देखते तो 예, 여기에 유두고라는 사람이 나옵니다. यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है युतुकुस। 바울이 늦게까지 설교를 할 때 그는 창문에 걸터 앉아 가지고 졸던 사람이었습니다. और जब पौलुस जब प्रचार कर रहा था तो फिर वो खिड़की पर बैठा हुआ था। 그런데 그가 창문에 걸터 앉았다가 졸음을 이기지 못해서 결국 3층에서 वो 떨어졌습니다. अपने जो नींद पे काबू नहीं कर सका था और
खिड़की पे बैठे बैठे वो तीसरी मंजिल से 그래서 नीचे गिरा। 사람들이 이제 내려가서 보니까 이제 유도고는 죽어 있는 것입니다. और जब लोग नीचे गए और उसको उठाया तो फिर वो मर चुका था। 그래서 많은 사람들이 와서 아이고 유도고가 죽었네. बहुत सारे लोगों ने कहा यूतुकोस मर चुका है, 세상에 어째 이런 일이 다 있어. ये कैसे हो सका था? 아이고 참 하나님 왜 이러십니까? परमेश्वर तूने ऐसा 이거 क्यों 나쁜 짓 किया? 한 것도 아니고 좀 졸았다는 것 때문에 유도고를 죽입니까? उसे नींद है वो सोया इसलिए क्या उसको मार दिया? He didn't do 그러면 anything 유도고의 그 bad. 가족들도 있었을 거고요. शायद वहाँ पे यूतुकोस की माँ भी हो सकती 만약 थी। 아니. 유도고의 엄마가 있었다면 얼마나 슬퍼했겠습니까? अगर उस यूतुकोस की माँ अगर होती तो वो कैसे हो सकती थी? 사도 바울도 내려갔습니다. और प्रेरित पौल नीचे 그리고 गया 사도 바울도 유도고를 봤습니다. और प्रेरित पौल ने यूतुकोस को देखा। 분명히 죽은 거 맞습니다. हाँ, वो जरूर मर चुका था। 그런데 사도 바울도 이 유도고가 죽었네. 어찌 이런 일이 있지? 안타깝네. 이렇게 이야기할 수도 있었습니다. प्रेरित पौल ऐसे बोल सकता था यूतुकोस मर चुका है, ये कैसा हो गया, मुझे बहुत दुख लग रहा है। 근데 그 생각이 들지 않았다고는 생각하지 않습니다. लेकिन मैंने सोचता हूँ इस प्रकार का उसके पास सोच हो सकता 그때 है। 박옥수 목사님은 뭐라고 있냐 하면은 लेकिन फिर पास्टर ऑक्सुपाक ने कहा 사도 바울도 유도고를 봤을 때 아유 죽었구나 안타깝다 이렇게 이야기하고 싶었을 것이라는 거예요. प्रेरित पौल जब यूतुकोस को देखा शायद उसके पास ऐसा मन होता आने बोलने के लिए, हाँ यूतुकोस मर चुका है, मुझे बहुत दुख लग रहा है। 그런데 바울은 그 이야기하지 않았습니다. लेकिन प्रेरित पौल ने ऐसा नहीं कहा। 떠들지 마라. उसने कहा कि शांत हो जा, 유도고 살아있다. यूतुकोस जीवित 생명이 है, 그에게 있다. उसके अंदर जीवन है, 그렇게 말씀했다. ये उसने ऐसे कहा। 사도 바울이 안 죽었기 때문에 이야기입니까? वो इसलिए ऐसे बोला क्योंकि वो मर नहीं चुका था इसलिए? 했습니다. नहीं, वो तो मर चुका था, 그렇지만은 그는 죽었다고 하지 लेकिन उसने 않았습니다. कभी नहीं कहा कि वो मर चुका है। 살아있다라고 이야기했습니다. उसने कहा कि उसके अंदर जीवन है, 떠들지 마라고 이야기했습니다. उसने कहा कि शांत हो जाओ। 저는 그 이야기를 들으면서 और जैसे मैंने वो उसको सुना 아 바울도 죽은 걸 확인했는데 और प्रेरित पौल ने भी देखा 네, कि 자기 वो 기본이 मर 돼. चुका है। 눈에 보이는 걸 입술로 대변하는 것이 아니라 उसने अपने आंखों से नहीं देखा जो उसने देखा, 자기가 확인한 것으로서 자기 입으로 이야기하는 것이 아니고 उसने अपने मुंह से नहीं बोला जो उसने देखा। 이 사도 바울은 하나님이 이 유도고를 어떻게 उसने अपने मुंह से 보느냐 नहीं कहा जो उसने कि उसकी पुष्टि की 예수님이 उसने। 여기에 계셨다면 유도고에게 뭐라고 이야기했을까 और अगर यीशु यहाँ पर होता है यूतिकोस को उसने क्या कहा होगा? 그 이야기를 사도 바울 한 거란 और वो प्रेरित पौल ने 바로 कहा, 이게 믿음의 삶이라는 것입니다. ये विश्वास का जीवन है। 여러분 오늘 여러분 눈에 보이는 이야기를 하지 마십시오. इसलिए आप जो देखते हो उसके बारे में बोलो मत। 어려면 어렵다고 이야기하지 마십시오. हालांकि कठिनाई है लेकिन आप मत बोलो कि कठिन है। 하나님이 어떻게 말씀하고 있는가를 우리는 보셔야 됩니다. जो परमेश्वर ने कहा उसको हमें देखना है। 여러분 이 온 세상은 지금 코로나로 인해서 코로나 바이러스로 인해서 온 세상 사람들이 지금 두려워하고 있습니다. और इस दुनिया में सारे लोग डर में है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। 전 세계가 지금 이 인류 역사상 이렇게 전염병으로 온 세상에 퍼진 적은 없었습니다. और मनुष्य के जीवन में इस प्रकार के बहुत बड़ी महामारी इस दुनिया में कभी नहीं हो सकी थी। 지금 많은 확진자로 또 많은 지금 현재 사망자들이 일어나고 있습니다. और बहुत सारे संक्रमित लोग थे और बहुत सारे लोग मर चुके हैं। 성경에도 열왕기하 6장 7장에 이 비슷한 사건이 나옵니다. और दूसरे राज्य का 6 और 7 अध्याय में इस प्रकार के एक घटना हुई। 거기는 사마리아 성이 아람 나라의 포위를 당함으로써 지금 이 코로나 바이러스처럼 그런 문제가 생겼습니다. और सामरिया का जो शहर जो है आरामी दल ने उसको घेर लिया था और आज की तरह ही वैसे कुछ समस्या थी वहां पर। 성경에 보면은 먹지도 못하는 여러분 나귀머리 하나가 수만 달러를 US 달러 수만 달러를 하는 겁니다. और गधे का सर जो कभी खा नहीं सकता था लेकिन उसका भी $10,000 $110,000 उसका भी दाम था। 합번 때 비둘기 똥 그거 먹지도 못하는 그 여러분 일회용 컵 그 반컵 정도가 그게 몇십만 원씩 하는 그때였습니다. और ये उस समय था कि कबूतर की जो संडास जो था वो भी $100 तक था। 여러분 심지어 사마리아 성중에 무슨 일이 생긴 줄 아십니까? और आपको पता है कि समारे के शहर में और भी क्या क्या हुआ? 여러분 여자들이 자기 아기를 낳은 아기를 और उन औरतों ने जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया 너무 배가 고프니까 और वे भूखे थे, 이제 죽을 것 같으니까
उन्होंने कहा कि वो लोग मर जाएंगे 그래서 여자들이 이야기해요. 우리 아이를 잡아먹자. और औरतों ने एक दूसरे से बात की उन्होंने कहा कि चलो हम अपने बच्चों को ही खा लेंगे 오늘은 내 아들 먹고 내일은 네 아들 먹자. आज हम मेरे बच्चों को खाएंगे कल तुम्हारे बच्चों को खाएंगे 세상에 어찌 이런 일이 있을 수 있습니까? कैसे ये हो सका था 얼마나 기근이 심했으면 और कितना गंभीर था 여자들이 ये 자기 आकार। 아기를 잡아먹는 이런 일이 생깁니까? कैसे औरतें अपने खुद के बच्चे खा सकते थे 그때였습니다. लेकिन ये उस समय के समय था 엘리사도 그 성에 있었습니다. और वहां पे भविष्यवक्ता एलिशा था 얘 엘리사도 어렵구나. और एलिशा भी बोल सकता था कठिन है 기근을 본 적이 없어. मैंने कभी ऐसा अकाल देखा नहीं 야, 이 애굽에 사마리아에 어떻게 이런 일이 있을까? और सामरिया के शहर में ऐसे कैसे हो सका था 예, 그도 사마리아 성 안에 있었습니다. वो भी उस सामरिया के शहर में था 근데 엘리사는 그렇게 하지 않았습니다. लेकिन भविष्यवक्ता एलिशा ने ऐसा नहीं 내일 कहा 이맘때에 고운가루 한 사에 한 세겔 하고 कल इस समय फाटक में सा बर मैदा एक शक्ल में बिका जाएगा 그 말은 내일 하루만 지나면 오늘 하루만 지나면 내일이면은 많은 양식이 생긴다. इसका मतलब आज के बाद कल भरपूर खाना होगा 양식이 어디 있습니까? 양식이 없습니다. कोई खाना नहीं है 예, 그러나 엘리야는 이야기를 했습니다. लेकिन एलिशा ने कहा 예, 엘리사는 자기 눈에 보이는 이야기를 하지 않았습니다. जो उसने देखा उसने बोला नहीं 그리고는 그는 말씀으로 외쳤습니다. ऊंचे शब्द से उसने चिल्लाया 마치 아무것도 없는 세상에 जिस दुनिया में कुछ भी नहीं है 하늘에 새가 날아라. वहां पे पंछियां उड़ने दो 강과 바다에 물고기가 생겨라. और समंदर में और नदियां में मछलियां आने दो 하늘에 별과 달과 태양과 달과 별이 생겨라. और आकाश पे सूरज चांद और तारे होने दो 땅에는 각종 짐승들이 생기라. और इस दुनिया में बहुत प्रकार के जानवर होने दो 또 없는데 하나님 말씀이 나타나서 कुछ नहीं से ये परमेश्वर का शब्द 이 उभर गया 세상을 충만하게 하신 और इस दुनिया को भरा 하나님 말씀으로 역사하십니다. परमेश्वर शब्द के जरिए काम करता 하나님은 है 형편과 상관없이 말씀으로 일하십니다. परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं परमेश्वर से वचन के जरिए काम 예, करता 2000년 है 전에 이 땅에 오신 예수님도 말씀으로 일하셨습니다. यीशु मसीह जो 2000 साल पहले आए वो शब्द के जरिए काम 예, किया 오늘 우리도 역시 우리가 말씀을 선포해야 आज 합니다. हमें शब्द को बोलना है 그리고 그 말씀이 선포한 그 말씀을 하나님은 이루셔야 और 됩니다. परमेश्वर जो इस शब्द को घोषित करना है 엘리사는 외쳤고요. एलिशा ने चिल्लाया 하나님은 그 외침을 그 말씀을 이루셨습니다. और शब्द में परमेश्वर ने उसके 엘리사가 चिल्लाहट 문둥이 को 4명을 परिपूर्ण 불러가지고 कर दिया। 아람진에 보낸 게 아니고요. ऐसा नहीं कि एलिशा ने 4 कोड़ी को बुला के आरामी दल में भेजा 엘리사는 그 일을 하지 않았습니다. एलिशा ने सिर्फ शब्द को बोला 하나님 문둥이 4명의 마음들을 이끌어서 아람진으로 가게 한 것입니다. परमेश्वर ने 4 कोड़ियों के मन को उकसाया और उस आरामी दल में भेजा 바로 이것이 믿음의 삶입니다. ये है विश्वास का जीवन 그리고 하나님은 그 말씀대로 이루셔야 됩니다. और परमेश्वर को शब्द को परिपूर्ण करना ही 여러분 है 문둥이 여러분 그 사도행전 27장에 보면은요. प्रेरित के 27 अध्याय में 바울이 타고 가고 있는 그 배가 로마로 가고 있는 그 배가 큰 유라굴로라는 풍랑을 만나 가지고 14일 동안에 그 바다에서 죽을 고생을 합니다. और जो जहाज जिसमें प्रेरित पॉल रोम जा रहा था और उनकी मुलाकात वो उस तूफान यूरोकोलन से मिले और फिर वो 14 दिन के लिए सिर्फ खो गए थे 예, 하늘에 낮에는 해를 보지 못했고요. दिन के वक्त वो सूरज को देख नहीं सके थे 밤에는 달과 별을 보지 못했습니다. रात के वक्त चांद और तारे देख नहीं सके थे 그리고 배에는 완전히 탄 사람 모든 사람들에게는 और 사망이 सभी लोग 왔죠. जो जहाज में थे उनके सबके पास मृत्यु आई 모든 사람 우리가 죽었구나. सभी लोग को लगा कि अभी हम लोग सब मर गए 그 मर 생각 जाएंगे। 말고는 다른 어떤 생각도 할 수 없었습니다. और कुछ वो सोच नहीं सके थे 그때 사도 바울은 뭐라 합니까? Then और फिर प्रेरित पॉल ने क्या कहा 여러분들이요 안심하라. सभी लोग सब आनंद 이제 하나님께서 우리를 다 살려 주셨다고 말씀하셨다. परमेश्वर ने कहा कि हम सबको वो 나는 그 बचाएगा 하나님을 믿습니다. और मैं उस परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ 풍랑을 거쳤을 때 그 이야기했습니다. क्यों ऐसा किया जब कुछ तूफान नहीं था तो उस वक्त कहा 여러분이 안심하라 할 때 या कि वे बहुत ही राहत में थे तभी कहा 아닙니다. 여전히 풍랑이 그대로 있었습니다. फिर भी आंधी तूफान था 바로 이게 믿음의 삶이라는 것입니다. लेकिन ये विश्वास का Faith. 여러분 जीवन 우리가 죄 사함 받을 때도 마찬가지입니다. वैसे ही जब हम उद्धार को पाए 우리가 Faith. 죄를 안 짓고 ऐसा नहीं कि हम लोग पाप नहीं करते 우리가 거룩하게 삶을 사니까 और हम पवित्र जीवन जीते हैं 그래서 우리가 죄 없다, 어렵다, 거룩하다 한 게 아니고요. वो ऐसा नहीं कि और फिर हम जो कहते हैं कि मैं धर्मी हूँ या पवित्र किया गया हूँ ऐसे 여러분 우리는 죄인으로 태어났고
हम पापी करके जन्मे 그러니까 थे, 이제 죄를 짓고 살아왔으며 हमने अपने जीवन को जिया है पाप करते 오늘도 हुए, 죄를 짓고 और आज भी हम लोग पाप करते हैं, 앞으로도 우리는 죄를 지을 수밖에 없는 우리들입니다. और भविष्य में भी हम ऐसे लोग इसे पाप ही कर सकते हैं. 그런데 우리는 그래서 많은 사람들은 주의 죄인입니다. बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मैं पापी 예, हूँ. 형편을 대변하는 이야기를 하죠. वे परिस्थिति को वो ढूंढते हैं. 그러나 여러분 오늘 무슨 이야기를 우리는 해야 됩니까? लेकिन हमें आज क्या कहना है? 믿음의 사람은 विश्वास के जो जन है, 하나님 오늘 우리에게 무슨 일을 했는지, परमेश्वर उनके लिए क्या किया है, 예수님이 십자가에서 어떤 일을 하셨는지, क्रूस पे यीशु ने क्या किया है, 그리고 성경은 오늘 우리에게 뭐라고 이야기하는지 और बाइबल आज हमसे क्या कह रहा है, 거기에 우리는 마음을 둬야 하는 것입니다. वहां पर हमें अपने मन को रखना है. 많은 사람들은 자신의 생각 속에서 살아가고 있습니다. बहुत सारे लोग अपने सोच में जीते हैं. 저는 아프리카의 동부 남부를 담당하고 있습니다. और मैं पूर्व और दक्षिण भाग अफ्रीका का मैं इंचार्ज हूँ. 그래서 저는 1년에 수십 차례의 아프리카를 들어갑니다. और एक साल में बहुत बार मैं अफ्रीका जाया करता हूँ. 그래서 저는 동남부에 있는 모든 아프리카에 있는 아프리카의 국가들은 다 다녀왔습니다. और अफ्रीका के पूर्व और दक्षिण के बहुत सारे देशों में मैं गया हूँ. 예, 거기에 있는 때로는 대통령님도 만나고 वहाँ के राष्ट्रपतियों से मैं मिला हूँ, 또 장관님들, 청소년 장관, 교육부 장관님들도 만나고 और युवा और शिक्षा मंत्रियों से भी मैं मिला हूँ. 예, 각 나라의 국립대학교 총장님의 사립대학교 총장님도 만나고 और बहुत सारे जो है कुल अधिपतियों जो नेशनल और 또 कॉलेज 여러 कॉलेज से भी 기독교 मिला हूँ. 지도자들도 만나고 있습니다. और बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर से मेरी मुलाकात 자, हुई है. 그럴 때마다 하나님이 많은 각 세계의 CLF에 있는 우리가 기독교 지도자들을 만났을 때 और पूरी दुनिया में CLF के जरिए बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर से मेरी मुलाकात हुई. 예, 그 귀하신 분들이 그 나라의 각 대표 되시는 분들이지만 우리가 전하는 이 말씀에 많은 분의 마음을 열고 있는 걸 봤습니다. लेकिन वे बहुत ही मूल्यवान लोग अपने देश के वो प्रतिनिधि लगे हम देख सकते हैं कि कैसे उनका मन खुला गया था जब हम लोग सुसमाचार प्रचार किए. 특히 아프리카에 있는 대부분에 있는 나라의 장관님들은 한국에 오셨거나 또 이렇게 저희들하고 연결되어지는 걸 볼 수 있습니다. और हम विशेष करके देखिए कि बहुत सारे मंत्री जो अफ्रीका में कोरिया में आके और हो सब 예. हमसे जुड़े हैं. 한 번은 제가 잊을 수 없는 제 추억이 있습니다. और बहुत 예, 아프리카 보는 वाली बहुत सारी यादें हैं 잠비아의 मेरे पास. 정부가 우리 IYF에 20헥타르의 우리한테 땅을 줬습니다. और जाम्बिया के सरकार ने IYF को 20 हेक्टेयर जमीन दे दिया है. 그래서 정부는 우리에게 땅을 줬고 우리는 그 땅에 청소년 센터를 지금 거의 완공되어져 가고 있습니다. और सरकार ने हमें जमीन दी और वो IYF यूथ सेंटर लगभग हमने खत्म कर दिया बांधकर. 예, 그 일이 이제 3년 전에 이루어진 ये हुआ था 이야기인데요. 2 साल पहले. 제가 그때 우리 바우스 목사님과 함께 잠비아를 और 갔습니다. पास्टर पाक के साथ में मैं जाम्बिया गया था. 예, 에드가 룽구 대통령님과 우리 IF 이제 CLF 우리가 창립 우리 설립자인 우리 목사님하고 이제 기공식을 가지는 날이었습니다. और उस राष्ट्रपति उस देश के राष्ट्रपति और जो फाउंडर पास्टर ऑक्सू पाक के साथ परिवर्तनात्मक समारोह हम लोग करने वाले 그래서 थे. 이제 내일 있을 행사를 위해서 저는 그 현장에 그 자리에 가서 준비를 하고 있었습니다. और जो आने वाला जो समारोह उसके तैयारी में अंदर मैं था और मैं उसकी तैयारी कर 그래서 रहा था. 이제 그 잠비아의 국방부 공병대가 와서 길을 이렇게 만들고 있고 और मार्चिंग बैंड और जो जाम्बिया के सैनिक आके उन लोग रोड बना रहे थे. 예, 또 잠비아 정부의 청소년부 또 교육부 그리고 또 대통령 비서실 많은 분들이 와서 하루 전날 이제 내일 있을 대통령의 그 행사를 준비하고 있었습니다. और मंत्री और युवा मंत्री और शिक्षण मंत्री आंतरिक मंत्री सब लोग आके सब लोग तैयारी में कर रहे थे. 예, 그래서 저는 대통령 비서실로부터 내일 스케줄 이야기를 들었습니다. और फिर जो राष्ट्रपति के सचिव ने मुझे 예, समय 대통령께서 सूची दी थी कल के लिए. 그 기공식 장소에 오시면 설립자 목사님하고 같이 이제 그 장소에서 만나십니다. और जब राष्ट्रपति आएंगे और हमारे जो फाउंडर पास्टर ऑक्सू पाक को मिलेंगे वहां पर. 이제 거기 대통령 축사도 하시고 और राष्ट्रपति जो है बधाई का संदेश देंगे. 예, 우리 목사님 또 이렇게 메시지도 전하시고 और हमारे पास्टर भी संदेश देंगे. 우리 그라시아 합창단 이제 공연도 하고
और हमारे ग्राशिया स्क्वायर वो प्रदर्शन करने वाले थे 예, 그리고 여러 가지 이제 우리가 세레모니가 और 있는데요. हमने ऐसे अलग सा समारोह बनाया था 그래 이제 그걸 마치고 나면 और वो खत्म होने के बाद 장관님은 대통령님은 그다음 행사를 위해서 다른 또 지역에 가시고 और राष्ट्रपति दूसरे जगह जाने वाले थे दूसरे समारोह के लिए 거기에 참석하셨던 내무부 장관, 교육부 장관 여러 장관님들은 목사님을 이제 초대해서 어떤 다른 그 호텔에서 이제 오찬회가 있습니다. और फिर बहुत सारे युवा मंत्री शिक्षण मंत्री आंतरिक मंत्री पास्टर पाक के साथ वो जाने वाले थे उस रिसेप्शन के ऊपर 그래서 이제 목사님하고 대통령을 만날 수 있는 시간은 그 기공식 현장 외에는 없는 거예요. और पास्टर पाक को मौका मिलना था उस राष्ट्रपति से मिलने के लिए सिर्फ समारोह के उस स्थान में 예, 그리고 저는 이제 다시 이제 행사장으로 돌아왔습니다. और मैं उस स्थान में 예, वापस 그리고 चला गया 그날 이제 다 마치고 우리가 이제 아침에 그 다음 날 아침에 새벽에 일찍 일어났습니다. और वो खत्म होने के बाद अगले सुबह भोर को हम उठे 이제 우리가 그곳에 있는 선교사님들하고 이제 미팅을 이제 아침에 기도회를 하고 있는. और वहाँ के मिशनरीज के साथ में हम लोग ने एक प्रार्थना की मीटिंग कर रहे थे 근데 설립자 우리 박우수 목사님께서 저한테 이렇게 पास्टर ऑक्सू 이야기했습니다. पार्क फाउंडर ने मुझसे कहा हे पास्टर ली 이 목사, Hey, 나 Pastor 오늘 Lee. 대통령 만나면 대통령께 복음을 전해드리고 싶다라고 했습니다. तो आज जब मैं राष्ट्रपति से मिलूंगा तो मैं उनको सुसमाचार प्रचार करना चाहूंगा 그때 제가 속으로 생각했습니다. लेकिन मैं अपने आप में ही कहने लगा 목사님, 내일 목사님께서 대통령 만나는 개인적인 시간은 없습니다. पास्टर कल आपके पास राष्ट्रपति साहब के साथ कोई एक व्यक्ति का समय 그 नहीं 기공식 है 공식적인 그 행사 자리 말고는 시간이 없습니다. उस समारोह को छोड़ दूसरा उनके पास दूसरा अपना समय नहीं है 왜냐하면 제가 하루 전날 스케줄을 듣고 왔기 때문에요. क्योंकि परसों के दिन मैंने उनका समय सूची पहले से ही मैंने सुन 근데 लिया 내가 था 목사님 개인적으로 복음 전할 시간이 안 될 것 같습니다라고 그 이야기를 제가 드리진 않았습니다. लेकिन मैंने पास्टर पाक को इस तरीके से नहीं कहा कि मैंने सोचता हूँ कि आपको एक निजी समय मिलेगा राष्ट्रपति साहब से बात करने के लिए 예, 목사님이라고. मैंने कहा कि जी हाँ पास्टर 왜냐하면 저는 목사님과 함께 지내는 동안에 많은 일들 속에서 안 되는 일들이 불가능한 일들이 이루어지는 걸 너무 많이 봤기 때문에 क्योंकि पास्टर पाक के साथ जब समय बिताया तो बहुत सारी असंभव वाली चीज भी संभव होते हुए मैंने देखा है 하나님 종이 대통령께 나 복음 전하고 싶다 하는데 목사님 시간 안 됩니다라고 이야기를 할 수가 없었어요. परमेश्वर का दास उन्हें सुसमाचार प्रचार करना चाहता तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं ये कुछ होने वाला नहीं है 그리고는 우리가 아침에 우리가 이제 기도하는 시간을 가졌습니다. और सुबह के समय हमने प्रार्थना का समय रखा 예, था 그리고 우리는 아침에 먹고 이제 그 행사장 장소로 기호식 장소로 और 갔습니다. नाश्ता खाने के बाद हम जो समारोह के उस जगह में गए 이제 그 가까이 왔는데 이제 그 대통령 비서실에서 연락이 온 거예요. और हम करीब गए थे और राष्ट्रपति और जो ऑफिस से हमें फोन आया 지금 기공식 그 장소에 길이 아직 완성이 되지 वो 못했다. परिवर्तन नामक समारोह का जो रोड है जो सड़क है अभी तक बनी नहीं है 그래서 지금 그 중간에 있는 정부가 운영하고 있는 연구소가 있는데 거기에서 대기하고 있으라 하고 연락이 और फिर हमें 왔습니다. ऐसा फोन आया कि आप उस रिसेप्शन सेंटर जो सरकारी सेंटर है वहाँ पे जाके आप क्यों नहीं इंतजार करते 예, 우리가 거기서 한 20분 장소에 기다리고 있었습니다. हम वहाँ पे 20 मिनट के लिए इंतजार कर रहे थे 근데 조금 있다가 보니까 막 많은 막 차량들이 먼지를 일으키면서 그 중앙 연구소 쪽으로 오고 있었습니다. लेकिन बाद में बहुत सारी गाड़ियाँ सेंट्रल रिसेप्शन सेंटर की ओर आ रहे थे 알고 보니까 그게 대통령께서 들어오신 거예요. हमें पता चला कि राष्ट्रपति साहब वहाँ पर आए हुए हैं 왜냐하면 대통령님도 그 행사장에 갈 수가 없었어요. क्योंकि उस समारोह के जगह में भी राष्ट्रपति साहब जा नहीं सके 거기는 길을 만들어야만 갈 수 있는데 그게 완성이 안 된 겁니다. क्योंकि उनको सड़क बनाना था वहाँ पे पहुँचने के लिए अभी तक लेकिन अभी तक सड़क बना नहीं था 세상에 여러분 이 대통령 오시는 행사에 길이 안 돼가지고 대통령 그 자리 못 가고 대통령도 대기한다는 이는 있을 수 없는 일이에요. मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ उस समारोह में जहाँ पे राष्ट्रपति को जाने और राष्ट्रपति को इंतजार करने सड़क नहीं बना ऐसा 그래, कभी हो नहीं 예전에도 सकता 없는 목사님하고 대통령하고 개인을 면담을 가질 수 있는 अभी 시간이 पास्टर 생긴 पाक के 거예요. पास एक अपने निजी समय मिला राष्ट्रपति के साथ बात करने के लिए जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था योजना नहीं बनाया था। 그래서 갑자기 이제 대통령님, 대무부 장관, 청소부 장관 들어가시고요, 잠비아에.
और फिर जो जाम्बिया के जो राष्ट्रपति और आंतरिक मंत्री और युवा मंत्री उस हॉल के अंदर गए 그리고 이제 박 목사님하고 통역 우리 박방 목사님하고 잠비아 선교사님하고 들어가신 거예요. और पास्टर ओक्सू पार्क, पास्टर जोसेफ पार्क जो अनुवादक है और जाम्बिया के मिशनरी वो अंदर चले गए 예, 거기서 이제 박 목사님께서 대통령 인사를 드리면서 바로 복음을 전하기 시작했습니다. और पास्टर पार्क ने राष्ट्रपति साहब को नमन किया और उन्होंने सुसमाचार उनको 그때 प्रचार किया 목사님께서 복음 전한 내용을 녹음한 거를 제가 이야기 들어본 적이 있는데 और मैंने वो रिकॉर्डिंग को सुना जी कैसे पास्टर ने उनको सुसमाचार प्रचार किया 대통령 각하 저는 목사입니다. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति साहब मैं एक पास्टर हूँ 성경을 처음 읽을 때는 성경의 뜻을 이해를 못했습니다. जब मैं पहली बार बाइबल पढ़ा तो इसका अर्थ मैं नहीं जान 그래서 पाया 성경하고 내 마음은 달랐습니다. और मेरा मन बाइबल से अलग था 근데 어느 날 내가 성경을 통해서 예수님이 우리를 어렵다는 이야기를 듣게 됐습니다. एक दिन बाइबल से वो भाग पढ़ा कि परमेश्वर ने जहाँ पर हमें क्रूस पर चढ़ाया है 나 지금까지 죄인이라고 했는데 और तब तक मैं सोच रहा था मैं 그래서 पापी 그 था 말씀을 받아들이며 예수님의 마음과 하나가 되었습니다. और मैं वचन को स्वीकार के एक मन का हुआ यीशु के साथ में 그때부터 하나님은 나를 바꾸기 시작했습니다. और तब से परमेश्वर मुझे बदलने लगा 그렇게 시작하면서 복음 이야기를 하기 시작됐어요. और वहां से उन्होंने उसको 너무 सुसमाचार 놀라운 प्रचार 거는 किया 대통령께서 너무 진지하게 그 말씀을 들으신 것이. और अद्भुत रूप से राष्ट्रपति साहब ने बहुत गंभीरता से वचन को सुना 대통령 거의 말씀하지 않고 목사님이 계속해서 하나님의 말씀을 전하게 되었습니다. राष्ट्रपति साहब ने ज्यादा नहीं बात किया लेकिन पास्टर पाक ने वचन प्रचार किया 대통령께서 너무 기뻐하셨습니다. और राष्ट्रपति साहब बहुत खुश थे 나중에 들은 이야기입니다. बाद में हमें सुना 대통령께서 대통령이 되시면서 제일 먼저 한 일이 뭐냐면 और एक राष्ट्रपति करके चुनाव होने के बाद पहला चीज जो राष्ट्रपति ने ये किया कि 잠비아에 있는 그 방송국에 기독교 방송 채널을 만들도록 그렇게 이야기를 하셨다는 이야기 들었습니다. उन्होंने कहा कि एक क्रिश्चियन चैनल प्रसारण करेंगे क्रिश्चियन चैनल का 그리고 참 그 대통령께서는 하나님을 사랑하시고 또 하나님의 말씀을 참 사모하시는 분인데 और राष्ट्रपति साहब वो है कि बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर के वचन का 그날 이렇게 जैसे 목사님 इंतजार करते 전해주신 हैं। 말씀을 들으시고 너무 기뻐하셨고 और पास्टर पाक से जब उन्होंने वचन को सुना वो बहुत खुश हो गए 그날 또 이렇게 목사님 통해서 잠비아와 대통령 각하를 위해서 기도하는 시간들을 가졌습니다. और उनके पास समय तो और पास्टर पाक ने जाम्बिया और राष्ट्रपति साहब के लिए प्रार्थना किया 예, 그게 다 마쳤을 때 이제 길이 열렸고 और वो खत्म हुआ तो सड़क आंखें अरे खुल 여기 गई 모여 있는 거기에 이제 행사장에 많은 사람들이 왔습니다. और उस जगह में 1000 लोग इकट्ठे हुए थे 그리고 그 행사는 너무 아름다웠습니다. और वो समारोह बहुत सुंदर 특히 이제 हुआ 대통령 각하 기뻐하시고 विशेष करके राष्ट्रपति साहब बहुत ज्यादा खुश थे 예, 그 행사장은 정말 축제의 분위기였습니다. और वो जैसे कि एक पार्टी का जश्न था 우리 그라시아스는 잠비아의 예국가를 두 번이나 부르게 되고 और ग्राशियस कोयर ने राष्ट्रगीत जाम्बिया के 2 बार गाए 거기 있는 청중들은 너무 기뻐하시고 और सभी लोग बहुत आनंदित थे 이제 여기에 이제 큰 선교센터가 지어지면 잠비아에 있는 청소년들이 정말 그 행복 속에 잠들고 소망 가운데 일어날 수 있는 그런 센터가 될 것 같습니다. और जब यूथ सेंटर खत्म होएगा तो बहुत सारे युवा जाम्बिया के वो खुशी में आनंद में सोएंगे और आशा में वो 저는 지금도 उठेंगे 잊을 수가 없습니다. अभी भी मैं भूल नहीं 이 सकता 목사나 대통령 만나면 복음 전하고 싶어. पास्टर ली जब मैं राष्ट्रपति से मिलना चाहता हूँ मैं उनको सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ 야, 근데 그 말씀이 어떻게 이루어지지? कैसे वो वचन परिपूर्ण हो सका था 하나님께서 너무 놀랍게 그 말씀을 이루시는 것을 볼 수 कितना 있었습니다. अद्भुत रूप से हम देख सके थे कैसे परमेश्वर ने उसको परिपूर्ण किया 정말 너무 놀라웠습니다. सचमुच में वो बहुत ज्यादा अद्भुत था 정말 그 대통령님을 만날 수 있는 상황이 아니었지만 हम ऐसे परिस्थिति में थे कि हम राष्ट्रपति को मिल नहीं सकते थे 마치 엘리사가 내일 이맘때 고운가루 한 사에 한 세겔하리라 하고 외치니까 जब एलिशा ने चिल्लाया कि कल इसी समय एक साबर मैदा एक शक्ल में बेचा जाएगा 하나님은 문둥이 4명을 통해서 아람 진으로 가게 하고 और परमेश्वर ने 4 कोड़ियों को ऐसे तैयार किया कि वो 문둥이 आरामी दल में चले 4명이 जाए 아람 진으로 오는 그 소리를 하나님은 그 소리 효과를 내 가지고 그 군대들은 큰 말소리와 군대 소리로 그들이 착각을 일으키고 또 다 도망가게 하신 것처럼 परमेश्वर ने 4 कोड़ियों के आवाजों को ऐसा बनाया था कि आरामी दल ने बहुत बड़ी सेना की आवाज को सुनाई दिया और सभी लोग वहां से भाग के 하나님 चले गए 그렇게 역사하시는 것을 우리가 이 시대에도 볼 수가 있었습니다. इस समय भी हम देख सकते हैं कैसे उसी समय उसी तरह से परमेश्वर काम करते हैं 믿음의 삶이 뭡니까? विश्वास का जीवन क्या है 내 생각을 버리고 वो मेरे सोच को फेंकना 주님이 है 일하실 것을 믿는 믿음을 가지는 것이. ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर काम करेगा 어느 시대든 하나님의 종들은 कोई भी युग में क्यों ना हो
예수님 परमेश्वर God, 예수님과 같이 형편의 이야기를 하지 않고 말씀을 선포하는 것을 볼 수가 있었어요. वो परिस्थिति के बारे में बातें नहीं करते, लेकिन यीशु के जैसे वचनों को वो घोषित करते हैं। 예, 사랑하는 주님께서 이번에 이 CLF를 통해서 इस समय CLF के जरिए 많은 분들이 이런 놀라운 믿음의 삶을 사는 그런 계기가 되기를 바라는 마음이 있습니다. मैं आशा करता हूँ ये समय बहुत सारे लोगों के लिए होगा विश्वास से जीने के लिए। 예, 여러분 이 CLF에 참석하신 여러분 다 이렇게 행복하길 바라고 सारे CLF के प्रतिभागियों, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत खुश 또 होंगे 유익하고 복된 시간을 보내시길 바랍니다. और मैं आशा करता हूँ बहुत ही फायदेमंद समय 이번 आपके पास होगा। 시간은 여기까지 말씀드리겠습니다. और मैं अपना शब्द को यहीं पे खत्म 감사합니다. करता हूँ। बहुत धन्यवाद। 수고하셨습니다.